So, welcome to the new day. Question number three, textbook wala. Shubhangi Trading Company of Dombivali purchased a machinery for 86,000 on 1st of January 2016. That's my purchase date. And immediately spent 4,000 on erection and fixation. मतलब क्या? I have spent 86 and I have spent 4,000. So my total amount is it 90,000? Correct, no? Zabardast. Next. On 1st of October 16, an additional machinery was purchased for 40,000. On 1st October 17, machinery purchased on 1st of January, means this machinery, became obsolete. Obsolete का मतलब होता है outdated. You can write that. Outdated, out of fashion. And it was sold for 70,000. अच्छी बात है. The machinery was purchased for 90 at that time, and we are selling it at 70,000 after a year or two, whatever it is. On 1st of July, again, we are buying one more machinery for 45,000. Replace तो करना पड़ेगा ना सर. So basically, we have one machinery, two machinery, and the third machinery coming in. Depreciation is to be provided annually on 31st of March at the rate 12% per annum. कितना चार्ज लिए on fixed installment method, SLM method, FIM method, OCM method. So the same. कुछ भी बोल सकते हैं. पक्का? What I asked to prepare machinery account for the 3 years and pass the journal entries for the third year. मतलब आपको journal entry बनाना है, but only for the third year. I'll refer it to the work journal entry what we did earlier. और देख के करेंगे अपन, है ना? But firstly तो ledger for 3 years. So they are not asking me depreciation account. So in this question we are not making the depreciation account. क्यों बनाने का? They are not asking me. Yes, definitely they'll have to tell you. चलो, so start करते हैं. The very first one, Shubhangi Trading Company. So यहाँ पे the books of Shubhangi लिख दूँ. Shubhangi Trading Limited Company. Sorry. Yeah, we'll have to write it. That's why ठीक है मतलब you'll have to like हाँ. Sir, आगे. Have purchased the machinery on 1st of January 2016. So my year is starting and paid for fixation. So here I will be making the working note. Sir, पहले तो working note बनाना मुझे. उसके बाद में सब ताम झाम चालू होगा, है ना? सब मगज मेरी बात नहीं करूँ, पहले तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मेरे को. Now, a machinery account for 3 years and pass journal entries for the third year. हाँ, only third year का journal entry. There is no required to do the entries for the previous years. सन third year जब भी चालू होती तब से entries करना चालू कर देंगे आपको, और कुछ नहीं. ठीक है? But the working note for the first, because इतने समय हो जाएगा. Particulars, machine 1, machine 2 and machine 3. Correct है sir? चलो. No. No. I am purchasing on 1st of January 2016 for 90,000. 1st of January 16. My year will be ending on 31st of March 2016. 3 months, very good. And the next transaction that is happening, it is happening on 1st of October 16. So 31st March पहले आता है, year end हो जाता है. I will be charging depreciation. Less 3 months, ना sir? Correct है? So 3 months का depreciation charge करोगे सर आप. It is 12%. चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आंसर द कैलकुलेशन हो गया. 90,000 multiplied by 12% multiplied by 3 upon 12. 12 gets cancelled, 0 gets cancelled, 0 gets cancelled. आपके पास में 900 into 3 बचा, that is 27 only. Do you understand this? Shall I write it 27 only over here and subtract the amount I will be getting? 3 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
87,300. This is called as WDV as on 1st of April 16. It will start in the same year. In this year, we do know that we are buying an asset. So again, cost as on 1st of October 16. Machine 2 is coming in the picture at 40,000. Correct है? So यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सर 40,000 rupees. Simple? ठीक है. Machinery too, sir. Yes, sir. On 1st of October 17, the machinery was sold. Purchase on 1st of January became obsolete and was sold. तो बेच कभी रहे हो मालूम है सर आप? You are selling it on 1st of October. Now, can I tell you, if my year is starting on 1st of April 16, it has to end 31st March 2017. But the transaction is not happening in between. The transaction is happening here on October 2017. Yes or no? In between. Between नहीं है ना सर? हाँ. After the year end. After the year end. मतलब the transaction is happening after the Year end. तो अपन क्या करेंगे? Depreciation charge करेंगे. So here we are going to charge depreciation. Listen this. 16 करोगे 17. दोनों का करना पड़ेगा सर. Now have a look at it. I'll again tell you this. 1st April 16 से 31st March 17. We have made a purchase on October 16. वो रिकॉर्ड कर लिया. But the next transaction is October 17, which does not fall in that year. That falls in the next year. नहीं समझा? एक बार फिर से बता रहा हूँ. Your starting year is April 16, ending will be 31st March 17. In that year, October 16, you have made a purchase. उसका recording अपन ने कर लिया. Here it is. But जो सेल हुआ है that is happening on October 17 in the next year, next financial year. So उसका एंट्री इस साल तो आएगा पक्का? सर कैन वी गो अहेड नाउ? चलो. So I'll be charging depreciation till that date. My year ending is 31st of March 2017. Sir इसके पर full year का depreciation आएगा. Why? Because we are using it from the day one. But इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 months का आएगा. Now how did this 6 months come? आपने परचेज किया है अक्टूबर में, so you're gonna use it from October, November, December, January, February, March. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पक्का? हाँ. SLM मेथड है तो हम लोग कॉस्ट पे करेंगे सर. व्हाट इज द कॉस्ट? 90,000. So 90,000 12%. I am using it for 12 months. 12 gets cancelled, 0 gets cancelled, 0 gets cancelled. So 900 into 12. Is it 9 12s are 108? 10800. नहीं समझा? बराबर ना 108? So here it will be 10,800. Now depreciation on 40,000 for how many months? 6 months. चलो फिर से करना पड़ेगा. 40,000 12% and 6 upon 12 months. नहीं समझा? 6 ones are and 6 twos are. Correct है? Do one thing, na sir. Do one thing. Let this 12 gets cancelled and let this 6 be there in the picture. 0 0 0 0. So 400 into 6. 400 into 6. 2400. नहीं समझे? Very good. So here will be 2,400. Thakur, now I will be subtracting these two amounts. I'll be getting what? WD as on 1st of April 17. Now if you're subtracting this, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 6, ये 13. So 13 ना, 13 में 8, so 5 ना, ये 7 था, ये 1 का 6 था, तो ये 7, तो 76 फाइनली आप करेक्ट सर. इसको माइनस करना है अपने को सर. Will this be 37,600? Do you understand this मुंडा? जबरदस्त तुम.
Now your year ending, your year starts at 1st of April 17, ends at 31st March 18. पक्की बात है ये? So in this year, October 17 will fall. हाँ सेल थे यू अरे जबरदस्त हो तुम लोग यार. And here we are having a sale. What are they telling me? ये रहा sir. I'll again read that. On 1st of October 17, the machinery purchased on 1st of January 16 became obsolete and was sold for 70,000. So, दो ही चीज़ें तो याद रखनी है. 1st October 17, 70,000. Which asset? This one. The first one. बोलो क्या डिफिकल्टी है इसमें? समझ में आ रही है स्टेटमेंट? Yes or no? हाँ So, I will be charging depreciation till that date because मैं उसको बेच रहा हूँ. Depreciation till 1st of October 17. Is it for 6 months? कैसे 6 months आया सर? अक्टूबर टू जनवरी, सॉरी अप्रैल टू अक्टूबर. अक्टूबर 6 मंथ्स नहीं समझा? हाँ अक्टूबर यस, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. 1st अक्टूबर तो ही नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 6. किस पे? 90,000 पे. सो 90,000 multiply by 12% multiply by 6 upon 12. No? So 6 upon 12. 12, 12 gets cancelled. 0, 0 gets cancelled. 900 multiply by 6. Answer is 50, 100. पक्का? आई होप जितना मेरा फास्ट ये इवेपोरेट हो जाता है उतना कॉन्सेप्ट इवेपोरेट नहीं हो रहा है ना? पक्का? चलो. So that will be 5,400. So if I'm subtracting this, I'm getting the answer is 71,100. yes That is going to be my WDV as on 1st of October 17. मैं इसको दोस्त बोलता हूँ. Date of sale. जबरदस्त हो तुम लोग. And I am selling off the asset at what value? 70,000 चलो 71 का asset I am selling it for 70,000. Tell me. Very good. 1100 का loss. Please don't tell me it's a profit or something. मजा आ रहा था करने में उसको. मुझे मजा आता है आप लोग का नहीं पता. So I'm getting the loss as 1100. पक्का? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. अच्छा, आगे एक और इन्फॉर्मेशन दिया है. दे आर अगेन बाइंग एन एसेट ऑन 1st of July 17. ओके ठीक है. So on 1st of July 17, a new machine was purchased for 45,000. ठीक है. So I have machine 3. So here I'll make the entry. Cost 1st of July 17. करेगा ना? But one more transaction has been given ना. So पहले रिकॉर्ड तो कर लो. डेप्री तो we'll do it on 31st of March 18. ईयर एंड. ईयर एंड कहाँ हो रहा है? ईयर एंड के पहले ट्रांजेक्शन हो रहा है. 17 दिस इज 17 or 18? This is 17 sir. हाँ, this one, no? The depreciation for this asset, right? When will we charge depreciation? At the year end. But year end होने से पहले there are two transactions. One is sale, one is purchase. Sale का कर दिया, purchase का भी कर रहा हूँ. ठीक है? And then afterwards we'll be charging depreciation. And you're absolutely correct. We'll be charging depreciation on M2 and M3. दोनों पे करूंगा मैं. But पहले मुझे वो purchase का तो एंट्री करने दो. Simple? जबरदस्त हो तुम लोग. So here I'll be having one more asset 45,000 का. Oh wait. Now year खत्म हो गया and now I'll be charging depreciation. So sir, look at this very carefully. I will be charging depreciation till 31st of March 2018. चालू कभी हुआ? 17. खत्म कभी होगा सर? 18. पक्का? Am I trying to tell you that this asset was there with you
फॉर द रेस्ट ऑफ योर ईयर, लास्ट में परचेज किया ना, इस साल तो स्टार्टिंग से था ना तुम्हारे पास में, सो आई विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जबरदस्त, पक्का? कैन यू डू दैट? चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट? 40,000, द कॉस्ट प्राइस इज 40,000। तो 40,000 के ऊपर चलो 12% निकालते हैं। 40,000, 12%, 12 upon 12 months, correct? 0000, 400 multiplied by 12. I am getting the answer as 4,800. Do you agree with me? You can do that also, sir. Very good. ये सर क्या बोलते हैं मेरे को मालूम है, ये मैथ्स में महापंडित लोग, अपन अपन नॉर्मल लोग हैं, तू और मैं सेम है। 2400 6 महीने के लिए हुआ, यहाँ पे ये चार्जिंग इट फॉर 12 months. तो 6 महीने का डबल कितना होता है? 12. तो 2400 का डबल कितना होएगा? 48. ये सब वो बोल रहा था। देखो क्लिक हुआ ये चीज, हाँ. मतलब तुम दोनों में, अपन तीनों में मैं खाली मैं ही एक बेवकूफ हूँ यहाँ पर। ठीक है चलो, लोग कभी नहीं क्लिक हुआ, बोलिए। मैं वैसे ऐस वर्क कर रहा हूँ, बोलो तो तुम लोग का ज्यादा स्मार्ट है। कहता मुझे ये करने की आदत पड़ गई है सर। यार शादी होने दे बेटा। यार मैं इतना जोक करता हूँ वाइफ के ऊपर, मैं कभी ऐसा, अगर वाइफ ने अकाउंट्स पढ़ना चाहा, एंड शी एक्चुअली फ्रॉम द साइंस फील्ड, एंड अगर उसने कभी अकाउंट्स पढ़ना चाहा, एंड मैं तो कभी नहीं बता रहा उसको कि मेरी वीडियोस, हाँ, शी नॉट इंटरेस्टेड, मतलब शी लुक्स एट द शॉर्ट्स एंड ऑल कि क्या जोक कर रहा हूँ मैं ना, छोटे छोटे एंड ऑल। सो एंड कभी ना वो प्रमोशन करने के लिए करना पड़ता है ना ऐसा, आजकल तो बहुत कर रहा हूँ। आई थिंक आई गॉट दैट, चस्का लग, कीड़ा लग गया है, चस्का लग गया है मेरे को। उस दिन मैं आई वाज लाइक, एक आई हैड अ स्टोरी टू से, एंड फिर मैंने क्या किया कि यार एक बच्चे को हाथ में फोन दे दिया, और तू कर यार ऐसा, तो डालते हैं हम लोग इसके ऊपर, उसने शूट भी किया है, आई अपलोडेड आल्सो, एंड आई वाज लाइक गोइंग ऑन, आई वाज थिंकिंग यार मैं कर क्या रहा हूँ यार। चस्का लग गया, एंड उसके बाद में द नेक्स्ट टाइम आल्सो आई वाज सर्चिंग फॉर अ गाय, क्योंकि देखो तो अच्छा वीडियो लिया था तो आज आया नहीं। सो बट सर द आंसर इज वेरी करेक्ट, है ना? 4800। नाउ अगेन आई विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन दिस 4500 वाला asset, but I'll be charging not for the whole year because I'm buying that asset on 1st of July. So I'll be using it from July. So July, perfect, 9 months. So July, August, September, October, November, December, January, February, March. That is going to be पक्का याद है, explanation के लिख दिया। So now चलो calculate करते हैं सर। 4500 multiply 45,000, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 45,000 multiplied by 12% multiplied by 9 upon 12, correct है? Now 12 12 gets cancelled, 0 0 gets cancelled, 0 0 gets cancelled. So 450 multiplied by 9, answer is 4050। शो ऑफ करूंगा मैं भी भाई, तूने मेरे को बताया, मैं भी तेरे को शो ऑफ करने वाला। सुन यहाँ पे मेरी बात, सी 4500, सॉरी 4 450 into 10 is 4500, and 450 into 1 is 450। मैं क्या बोलता हूँ, 10 minus 1 is 9, so 4500 minus 450 is equal to 405। you have that smoke smile on your, but देख मेरे को भी पता था, देख अगर तेरे को पता था तो ठीक है, बट मेरे को भी ये पता था, तो आप दोनों सेम नाव पे सवार है, ठीक है? तो दैट आंसर 4050, करेक्ट है? मैं भी शो ऑफ करेगा ना, बोले वैदिक मैथ सीख के आया रहेगा, है ना? सर आई एम, मतलब मैं एक्सपीरियंस वाला बंदा है, सर मैं एक्सपीरियंस से सीखा है सब चीज़ें। सर नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, एंड आई विल बी हैविंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में WDV। दिस इज माय WDV एज ऑन 1st of April 18। सो 37,600 माइनस 4800, चलो मैथमेटिशियन बोलो मुझे कितना आंसर आएगा? 32,800, करेक्ट है? एंड दिस इज गोइंग टू बी 40,950, नहीं नहीं, 39 also. 39,950, वही तो लिखा है मैंने।
वैसे लिखा है मैंने आगे। सर इट इज 40,900। कम ऑन मैन, क्या बात कर रहे हैं, मैं तेरे पे भरोसा किया ब्रो। उसका मतलब उसका भी वही था, राइट है। ओके सर, मैं पहले राइट लिखा था, आई शुडंट हैव अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ। मैं बिना सोचे तो मैं लाइन लिख रहा था, वरना इसमें मैं नहीं करने वाला मैं। सर इज दिस करेक्ट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? एनी प्रॉब्लम? अगर मैं टेढ़ा हूँ, मैं ड्राइंग्स वाले बना रहा हूँ बच्ची। डू यू अंडरस्टैंड दिस? या विल हैव टू जस्ट डू द एंट्रीज और कुछ भी। I will not make any mistake anything. We have to do it for 3 years, है ना? चलो, this is my account. कुठे गेला? ये account है मेरे पास में. And what I'll do ना, I'll just erase this instead. क्योंकि वैसे भी जगह कम पड़ता है. तो मस्त अपन. It's a good question. You can ask your professor in the college. They want that कि तुम थोड़ा सा भी सुकून से ना रहो. ये लोग वो बाय नॉर्मल डाउट्स क्लियर नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते. ओके चलो सर, अपन फटाफट से इसका पोस्टिंग कर लेते हैं एंड देन वी आर डन. कॉस्ट on 1st of January 2016 is 90,000. So is it by purchase? सर आपको पता ही है ना वो DSLPP, depreciation, selling price, loss on the credit side, purchase and profit on the debit side. So here I am going to write 1st of January 2016 to cash and bank account on the debit side. This is my purchase. How much is that? 90,000. चलो डन हो गया ये चीज. नेक्स्ट है मेरे पास में डेप्रिसिएशन 2700. परफेक्ट. on 31st of March. Last year बनाते हैं. No, no, we'll have to. Journal entry is only for the third year. Correct है? Other depreciation entries. So, how much is that? Amount भूल गई मैं. Like 2,700. करेक्ट है. Then I'll close. I'll be getting the WDV. आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि WDV is basically your balance. मतलब मैं एक मस्त चीज सिखाऊंगा, मैं सब मस्त एक शॉर्टकट दूंगा, आप भी खुश हो जाएंगे. 31st March 16. 87,300. हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट यहाँ से चुरा लेंगे. एंड आपको तो पता है कि हम लोग कभी भी WDV का एंट्री पास करते नहीं है. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट ईयर कॉस्ट 1st of October 2016. कॉस्ट ऑफ द परचेज है. अच्छा ये बैलेंस बॉट डाउन तो किया ही नहीं अपन ने सर. सी यू नीड नॉट प्रिपेयर, यू नीड नॉट मेक द एरो इन द एग्जामिनेशन. मैं बना रहा हूँ. 1st of April 16. How much is that? 87,300. I am going to buy an asset 16 में. Sorry. शॉर्ट फॉर्म लग सकता है CIB. हाँ मान लो शॉर्ट फॉर्म नहीं है सर. दैट इज फॉर 40,000. करेक्ट है. चलो नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन. ये रहा सर. डेप्रीसिएशन में वी हैव टू अमाउंट सर. 10,800 सर एंड 2,400. तो अपने को क्या करना है मालूम है, यहाँ पे वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ दी अमाउंट्स. तो लुक एट हाउ आई एम डूइंग इट. 31st March 17 by depreciation. Look at this. 10,800 and the other one was 2,000. टोटल कर लो ना सर. नो पहले वाला करेक्ट है. ऐड करके लिख दो ना, खत्म करो बात को. दिस विल बी 13,200. करेक्ट है सर. चलो WDV का वाला बात आ गया. सो विल बी हैविंग दिस बैलेंस 31st of March 17 by balance carried down. This is going to be 127,300.
मैं उसको प्लस नहीं करने वाला, मैं प्लस और माइनस नहीं करने वाला, मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक द टोटल ऑफ दिस एंड दिस अमाउंट will be exactly equal to the balancing figure over here. चेक करते ना, let's check it out. 76,500 plus 37,600. What will be the answer? It will be 0 0 1 7 है 7 14 1 11 1 lakh 14,000 and 100. Do you agree with me? So let's take the amount from here. 127 300 13,200. Is it 100 over here? Is it 4? Is it 11? Exactly same answer are. So any which ways that you like you can do it. So आपको माइनस करके लिखना है आप माइनस करो, आपको माइनस करके नहीं लिखना है आपको वो प्लस करना है वो करो. Answer will be the same. Hmm? The total of this वही दोनों अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग and then फिर do you understand this? पक्का. Any problem? जबरदस्त हो तुम लोग. खत्म. Going to the next part. So now quickly we'll do the next one. We have a depreciation on 1st of October 17, 5,400. तो यह अच्छा मैं हमेशा WDV का बॉट डाउन और भूल जा रहा हूँ. आप एग्जामिनेशन में मत भूलना सर. 1st of April 17 to balance bought down. You have a depreciation on 1st of October 17. Na? By depreciation on which asset? Sold asset. पक्का. Next sir. Yes, yes. WDV तो नहीं रिकॉर्ड करते ना हम लोग कभी. सेल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं एंड लॉस रिकॉर्ड करते हैं. तो हियर वी हैव DSL PP का फंडा यूज करेंगे. तो D लिख दिया. दिस इज S एंड दिस इज L. सो वी आर रिकॉर्डिंग DSL. पक्का सर. सेलिंग इज 71 एंड लॉस है तो वो भी इस तरफ ही आने वाला है. तो ऑन द सेम डे. वेरी गुड. बाई कैश पेन ये हमारा सेल है. The sale value is 70,000 and because of that we are having a loss that is transferred to profit and loss. This is my DSL 1100. Do you understand this Munna? So nothing becomes very simple. Again cost है सर आपको पता है cost कहाँ लिखते हैं हम लोग. Debit side 45,000 year 1st of July 17 to cash and bank. Technically अपने को ये वाला एंट्री पहले लिखना चाहिए था बट डजंट मैटर है ना. ठीक है. डेप्रिसिएशन सर. अरे बाप रे. डेप्रिसिएशन 48 and 4050. So here the depreciation on 31st of March 18 is going to be on unsold. Yes or no sir? 4050. Is it 8,850? Sir, problem? Basic? And I'll be getting a balancing figure over here. 31st 80 1,59,100. सर मालूम पड़ा कहाँ से आया मेरे को. करेक्ट. सेम अमाउंट 1,59,100. विल सब्ट्रैक्ट दिस. चलो एक्चुअली क्या आई कैन डायरेक्टली डू इट बट क्या है कि सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए इजीली कैंसिल. तो आंसर तो आ गया है. I'll subtract all these amount. That is going to be 1,59,100 minus 5,400 minus 70. बराबर है.
8850, 73 do you agree with me? शॉर्टकट बता दूं मैं तुम लोग को? एक और क्या था वो? आप ये वर्किंग नोट में जाओ, इन दोनों को ऐड करो, यू शुड गेट द सेम आंसर. लेट्स ट्राई. 73 आ रहा है क्या? 32,800 एंड 40,000. ये वाले अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ सो मैं. These ये two दोनों amounts. वैल्यू Yes, ऐड कर yes, दीजिए. yes. 40,950. Yay! We get the same answer. तो जैसे आपको मजा आती है आप वैसे करिए. खतरनाक सवाल. खतरनाक सम था ये वाला. To balance brought down, that is going to be 7, and you are done. So this is a working note which is going to get you the answer, but इसको कोई marks नहीं मिलेगा. But after this, the posting all becomes so simple. So why not do the working note? थोड़ा गधा मुझे भी जैसा लगता है आपको, बट द आंसर्स आर. मार्क्स किसके मिलने वाले हैं? आंसर में मिलने वाला है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज योर सोल्यूशन. मैंने इसको आपको पूरे पेज पे डाल दिया है. इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा. एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. ओके. वी आर लेफ्ट विद ओनली द जर्नल एंट्रीज, वो भी अपन कर रहे हैं अभी. Done. चलो.